generation that we are the future of Zong. Is that so? I personally dedicate each day of my life to my mother. But especially on Women's Day, I make it a point to say this over and over again, that whatever I am today is because of my mother. So here's wishing all the mothers sitting here and all our mothers a happy Women's Day as well. I think they are the reasons why we are here. We women are the most adaptive to change. Do you agree to that? Yes. Whether it's our professional lives or whether it's in our personal lives, we adapt to change. So that is why we are here today. That is why we are celebrating being bold for change. That is the international theme for Women's Day this year for 2017. So now with this note, I would like to call upon our respected CHRO to share her revitalizing thoughts on Women's Day. Give her a huge round of applause, Ms. Zong. My dear colleagues and all beautiful ladies, a very happy Women's Day to all of you, or to all of us, including me. I'm so proud to see Zong have a huge pool of talented ladies. You add great value to our organization each day. So I suggest we give ourselves a huge round of applause. I look out to be the best interest of all employees because I am a Sidra CHRO. But above all, I am also a female. So for female, I want to give you some suggestions. We should enjoy ourselves every day and continue learning to adapt ourselves to the environment so we can be more successful than we are today. As female, always we play different roles: daughters, mother, sister, employees, leader, and sometimes consultant. And I have seen you all work hard and manage your personal and professional lives so well. HR department will give you try our best to provide you best facilities and opportunities. For us, your health matters. So HR initiate some activities. And I also hope you all share, we all share our health plans with all of you. And I hope and urge you use these health coupons. And just Makin mentioned, I think you all enjoy our yoga sessions. And today, here, we have very, very talented ladies with us. I think you know her more than me. So, warmly welcome Mr. Sidra. Assalamu alaikum. A very, very happy Women's Day to all of you. I am Sidra Iqbal and it's my pleasure to be here at Zong and to meet with such fantastic teams and of course all the people who are manning these very important roles. No matter where you are in your life, no matter what you're doing at this point in time, no matter if you're waiting for certain things to happen, हो सकता है आप में से किसी ने एक ऐसा हेयर कट कराया हो जो आपको पसंद ना हो and you're waiting for it to grow out. Yeah, at the salon somebody played a havoc with your eyebrows and you're waiting for them to grow back. You're waiting for the bonus or you're waiting for your joda to come back from the tailor. There's always a lot of waiting that women end up doing. And today, when we have this fantastic theme of be bold for change, there are two very important words that are there: bold and change. And I'd like to draw your attention to that. But before we begin, और
just to look at this session as a training session would be injustice. I would like to begin by sharing my own story with you. And a lot of you may have seen me on television, you may have seen my work as a political anchor person. You may have learned that once upon a time, back in my school and my college days, I won an international debating championship. But then there are so many things that we women, and I think we humans do every day that never gets documented, that never makes it to our CV. हमें flash forward में अपनी ज़िंदगी याद होती है. We don't remember each and every minute, each and every second, which sometimes is a good thing because it's a good thing that we don't remember the pain. हम में से हर किसी ने ज़िंदगी में ups and downs देखे हैं, things that we have, you know, when we recall even today, that can bring tears in our eyes. But that never makes it on the CV. That never ever comes in as a bullet. What comes in are your achievements, things that you want to celebrate. In other words, even the smallest, the shortest of documents like your resume is a reminder that life में it's like a big booklet in front of you. आप में से कभी किसी ने online shopping की है? Show of hands. How many of you have shopped online? Okay. How many of you have shopped via a catalog? एक कैटलॉग देखा है, उसमें से अपनी पसंद की चीज़ कुछ चूज कर रहे हैं. Even when you have this new season of a new collection of lawn that comes out, maybe you don't see it, you know, in the shelf. You want to skim through the booklet, right? Life is exactly like that, and it is your choice कि आप कौन से पेज पे रुकते हैं. क्या आप किसी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ को बार बार रिकॉल करना चाहते हैं और वहीं रुक जाना चाहते हैं? Because anything that you give your attention to will grow in life. And this I learned very early on. I would want to begin my story when I was just in school. Or I'm sure some of you can relate to that. एक वाक़या हुआ था जिसको बहुत ही historical वाक़या माना जाता है. Princess Diana passed away suddenly. Like here we knew her as the Queen of Hearts, and before we knew it, one day she was gone, and it was a car accident. A very profound thing. यानी नंबर के हवाले से कहा जाए तो लोग कहते हैं कि there was a huge number of people who watched their live wedding all over the globe, but the number was triple and many-fold than the people who were actually watching her funeral. मुझे अच्छी तरह याद है कि I was a kid at that time and I was watching that funeral, and it was a big thing because growing up, our parents and our mother especially used to give an example of how graceful Lady Diana is, and she had visited Pakistan and she's worked with the cancer patients in the country. Very, very inspirational. Somebody who made it mainstream and who had that impact to work with charities, to work with people who don't have all the privileges in life. And she was no more. Even in her death, she was so generous that every part of her body, every organ that could have been donated was donated out. And I was watching it on screen. I still remember, एक मौका था उस footage में जब Buckingham Palace का दरवाजा खुलता है, and the carriage that had her body is taken out. I don't know मैं किस धुन में थी, क्या सोच रही थी, but I turned around to my mother, and here is this gawky teenager. I used to wear glasses, I used to have braces, sprawled on in my TV lounge, and I looked at that and I said, you know what? One day, the gates of Buckingham Palace will open for me like that. And my mother just looked at me, and my sisters were there, and my cousins were there. Everybody laughed, ha ha, kya baat kar rahi hai? And I don't know why I said that. It was just one of those moments. I tell you, Lady Diana passed away in 1997. In 1999, I was just 15 years old. There was a competition that was happening in London. And the first day the invitation came to my college, I was just a newbie. Abhi aap, you know, you're just 15, so there's so many people in the college who've been debating for the last 2 years, 3 years, जिन्होंने all Karachi competitions में participate किया, all Pakistan में participate किया, teachers के favorite भी हैं. तो सबका ख्याल था कि अब ये जो लंदन का बड़ा कंपटीशन हो रहा है उसमें किसी ऐसे ही मंझे हुए डिबेटर को वो लोग सिलेक्ट करके भेजेंगे. And it was just my first year in that institution. Yet I was so determined that I wrote a speech and I went to my teacher and I said, I want to participate. I was told to go away because again they had decided that somebody senior would go. I still remember
The competition was laid out to be that first there is going to be a competition in Karachi, then an all Pakistan competition, and then whoever is the winner will be sent to London. So when I did the, हमारा दरवाज़ा तो पहले ही पड़ाव पे बंद हो गया था. They said no, we're not sending you, we'll send somebody senior. 2 days before the Karachi competition. अच्छा एक उसमें शर्त ये थी कि आपने जो भी पार्टिसिपेंट हर स्कूल कॉलेज से पार्टिसिपेट कर रहा था उसके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. You had to submit that passport number along with participation so that अगर आप select हो जाते हैं तो आपको लंदन भेजा जाए. 2 days before the competition, the person they had chosen had a passport that had expired and they were looking for a person. Lo and behold, the teacher came running to me. तुमने speech लिखी थी ना? वो speech अभी भी तुम्हारे पास है? I'm like, yeah, I have it. Like, come on. And they tested me out, and I was attached to the senior debater as a spare wheel. कि अच्छा 2 भेजने हैं ना, चलो इसको भी भेज दो साथ. Only because she has a passport and she's ready to go. The competition in Karachi happened. It was a long competition. There were at least 112 institutes that participated. और confidence का ये हाल था कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हमारे speeches हो रही हैं and you're listening. Results are going to be announced later. And by the time the results were coming, we were dead tired. हमें भूल भी गया था कि हमने speech क्या की थी. लेकिन जब results announce होने वाले थे, I remember I was sitting in a place like this, and there were people आगे पीछे. So I woke up and my sister and my mother was on the corner seat. तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ seat exchange कर लें. And my mother turns around and she's like, why do you want to exchange your seat with me? I'm like, अभी वो मेरा नाम लेके बुलाएंगे तो निकलने में आसानी होगी. So my mind was already there. And lo and behold, it actually happened. I was chosen as the winner in Karachi. I was chosen as a winner in Pakistan. Pakistan wale mein there's another interesting story. Karachi mein to chalo, I won. And now they said the next step is that all the winners from all the different cities will be coming to Karachi. और कराची का कंपटीशन होगा और उसमें से फिर 2 लोगों को सिलेक्ट करके लंदन लेके जाएंगे. I'm not kidding you. We forgot the way to the venue. Me and my mother, we were in a taxi trying to look for the venue where the competition is, and my mother was literally almost at the verge of crying because उनको लगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी opportunity खोने वाली है. And I can never forget that face. She and I going round and round trying to look for the Pak American Cultural Center where the competition was supposed to be. And I won that as well. Now all selected. But the story is, a little more complicated. So came back home, पता चला कि जिस तारीख पे लंदन जाना है, उसमें तो O-levels के exams होने वाले हैं. So everybody said, oh my God, your year is going to be wasted for just a competition. And I still remember going up to my Nana, and my Nana sat down with me. He's like, Gabbar style में ना, कितने आदमी थे? So he turns around, कितने लोग competition में थे? I said, 112 institutes इसमें participate कर रहे थे. And he's like, you won in Karachi? I'm like, yes. Like, you won in Pakistan? He's like, yes. But then, life में सबसे ज़्यादा जो painful loves है, वो है काश. He's like, you don't want to come back to this moment ever in your life and think, what if? What if I had gone? So ये test, west, exams ये होते रहेंगे. You should never have a moment in your life and you turn back and you say, what if? अगर मैं वहाँ जाती तो मेरी story क्या होती? I had to go to London. I didn't have a suitcase. I borrowed my cousin's suitcase to go. और उसने भी in pure cousin style सबसे टूटा हुआ, सबसे पुराना, and जो word आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे फटीचर suitcase उसने मुझे दिया. And then I said, okay, lo and behold, my mother, she gathered money. My khala used to be there, but 4 दिन के लिए जा रहे थे तो 100 pounds. I still remember I only had 100 pounds in my pocket, and I went to London. And later on, when I went to shopping, my cousins made fun of me. 100 pounds लेके London घूमने आए हैं. I had a debating camp over there. The day of the competition, I didn't have anything except 14 cups of coffee. I kept on having coffee and I thought I was going to die, but I made it through the competition. And by 7 p.m. on the 13th of May 1999, it was announced that Sidra Iqbal from Pakistan is the winner of the championship that day. The icing
The icing on the cake was कि इस कंपटीशन का विनर सर्टिफिकेट आपको क्वीन के हाथ से बकिंगम पैलेस में मिलना। 2 years from actually having that wish of going there, and I can never forget. You know, बाहर से तो हम उसी वक्त देख के आ गए थे मई में, लेकिन by December when I was called in, those golden gates opening and going inside, it was something I will never forget. Because I still tell, I came back and in pure teenage style I was telling my mother, मैंने कहा मुझसे भी ऊंचे घोड़े थे, and they came with a carriage to get me, and the horses were taller than I am. Life was beautiful. I came back and I was immediately the star. Every newspaper wanted to cover me. You know, every college wanted to have me. People told me, and there were people who were judging this competition from the Oxford Debating Society, and they would give you the best of compliments. They would tell you that, oh, you remind me of Benazir Bhutto, and you're like, okay, that's like I've reached the pinnacle. I came back and I told my mom I want to go to college abroad. We couldn't afford it. Mom said, अच्छा अगर तुम्हारी scholarship हो जाती है तो तुम चली जाना. I was like, okay. अब scholarship के लिए बच्चे ने तैयारी शुरू कर दी. I attempted for 7 different A-level subjects. I had the perfect GMAT and a TOEFL score. I applied for scholarships everywhere, and I got into most of the colleges. I zeroed in on Boston University. I'm like, सबसे ज़्यादा scholarship यही दे रहे, पैसे हमारे पास कम हैं, यहीं पे चले जाते हैं. So I made it to that, and I was really, really happy. I was supposed to accept my offer in August. My mother said one more thing. She's like, तुम इसके बाद 4 साल के लिए चली जाओगी, तो हम पूरी फैमिली एक साथ उम्रा कर लेते हैं. I was like, okay, fair enough, कोई बात नहीं, एक सेमेस्टर ही तो ड्रॉप करना है. We went for Umrah in August. We came back on the 30th of August 2001, and I had just deferred my admission by 1 semester. मगर उस दौरान मेरी दुनिया बदल चुकी थी. 9/11 happened. Scholarship got cancelled. Visas got cancelled. Everything that I had worked towards for the last 2 years, जब आप समझ रहे हैं, you're on that high-flying streak, came crashing down. Apollo 13 हो गया उसके साथ. And like, okay, where do you go from here? क्योंकि locally तो मैंने कहीं apply भी नहीं किया. But life has a way of picking you up. It has a way of, you know, showing you ways, and new ways opened up. One of the most profound sayings that I have ever come across, and she's always one of the most inspirational people for me, is Oprah Winfrey. Oprah Winfrey की एक saying है, God can dream a bigger dream for you than you can dream for yourself. And your role on earth is to attach yourself to that divine force and let yourself be released to it. यानी आप और मैं जो ख्वाब देखते हैं, वो भी मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं. कुरान ही says कि अगर हम ना चाहें तो तुम सोच भी नहीं सकते. तो जो सोच, जो गुमान हमारे जहन में आता है, it's always that moment of inspiration. तभी कभी कभार हम हंसते हुए, कभी मजाक उड़ाते हुए किसी सिंगर को, किसी आर्टिस्ट को कहते हैं ना, मेरी अभी तो पे आमद होने वाली है. But that आमद is very real. I mean, there is a connection. You are nothing but energy. So God made His own ways for me, and I eventually ended up working in media. All the universities जहाँ मैं चाहती थी कि मैं 4 साल जाके वहाँ से undergrad करूँ, I was able to do a lot of scholarships. I was able to go on a lot of exchange programs. The colleges I couldn't manage to go to, I ended up hiring their people and working in organizations where they were reporting to me. So God has funny ways of showing you your worth. But our task over here, just like that catalog, is to handpick those moments of inspiration, to look at things in the most positive way. लेकिन ये मुश्किल होता है. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत आसान चीज़ है, because I'm sure wherever you are in your life, some of you may have already tuned out of this talk. आपके जहन में कोई ना कोई एक ऐसी उलझन है जो आपके जहन को उलझाए हुए है, और आप कहते हैं अच्छा ये बात कर रही है, मैं ये बात करती रहेंगी, अगले 30 मिनट तक भी इन्होंने बात ही करनी है, चलो ज़रा मैं सोच लूँ मैंने क्या क्या काम आज करने थे. वापसी में मैंने बच्चों को पिक करना है, कल हो सकता है बच्चे की स्कूल में कोई पार्टी है तो उसके लिए पिज़्ज़ा बनाना है, ओहो फलाने काम तो किया नहीं था, जाते जाते ड्राई क्लीनिंग भी उठानी है. एंड देन इन दैट मोमेंट यू फीलिंग वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड. आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दिस बुक कॉल्ड The Alchemist by Paulo Coelho? Okay, a few of you.
जिन लोगों ने के लिए मेरे पास एक और क्वेश्चन होता है. How many of you have seen this movie called Om Shanti Om with Shah Rukh Khan? Lesser hands. हम एडमिट कर सकते हैं. शाहरुख खान फैंस यहाँ पे कौन कौन है? किसने ओम शांति ओम देखी है? ओके, मच मोर हैंड्स, राइट? थैंक यू वेरी मच. ओम शांति ओम का सबसे फेमस डायलॉग कौन सा है? नॉट एक चुटकी सिंदूर, लेडीज. लेट्स गेट बियॉन्ड द सिंदूर एंड द शादी एंड द मैरिज. आज हम इस बारे में भी बात करेंगे. रिमाइंड मी ऑफ दैट. हाँ जी. इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की है, सारी कायनात ने तुमसे मिलाने की साजिश की. अभी किसी को बुलाऊं पाक जमीन के लिए नहीं आता होगा. डायलॉग सबको आता है. That's a good thing. That's a good thing. हम अपनी मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन है. पॉलो कोएल्हो ने भी बेचारे ने यही लिखा था अपनी किताब में. वो भी ये कह रहा था कि when you want something, you desire something, the whole universe is going to conspire and bring it to you. ये आधी स्टोरी है. आधी स्टोरी हमें सब बता देते हैं कि जी ओ किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो वो जरूर तुम्हें मिल जाएगी. यू लाइक डैम इट, आज आई वांटेड बिरयानी, वी मेड करेले. सो नो, जितनी शिद्दत से हम चाहते हैं ना जिस चीज को वो अक्सर नहीं मिलती है. लेकिन पॉलो कोएल्हो की इस किताब में वो आपको बताता है कि द स्टोरी गोज कि अ यंग बॉय हैज दिस ड्रीम ऑफ फाइंडिंग अ ट्रेजर. उसको ख्वाब में आता है कि जी कहीं दूर एक खजाना दफन है और मैं उस खजाने के पास पहुंचता हूँ. बड़ी मुश्किलें ऊपर नीचे, कहीं वो बेचारा बैंकक्रफ्ट हो जाता है, कहीं गरीब हो जाता है, कहीं लुट जाता है, फिर थोड़े काम करता है, किसी क्रिस्टल शॉप में काम करता है, अगवा हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत को भी कहता है अच्छा रुको मैं पहले ख़जाना लेके आता हूँ. करते कराते वो उस जगह तक पहुँचता है जहाँ पर उसका ख्वाब आया होता है कि ख़जाना यहाँ दफन है. एंड व्हेन ही ओपन्स दैट प्लेस अप ही रियलाइजेस कि ख़जाना एक्चुअली वही है जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की. सो व्हाट वाज दिस जर्नी ऑल अबाउट? If the treasure is exactly where you start your journey off from, then why did we have to undertake it? You undertake the journey to become worthy for the treasure. And that's the part nobody tells you. How many of you realize that there's something called the beginner's luck? इसकी एक मिसाल देती हूँ. पहली दफ़ा जब आप कोई काम करते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे होते हैं. फर्स्ट टाइम यू प्लेड बैडमिंटन, यू वर गुड, राइट? फर्स्ट टाइम यू ट्राइड चिकन हांडी, बहुत अच्छी बन गई, ठीक है? और आप बड़े खुश हो गए कि यार ये तो बात ही नहीं है, मैं इतनी अमेजिंग हूँ, दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा. बट द सेकेंड टाइम यू टोल्ड एवरीवन, यू नो व्हाट, कम ओवर, टुडे आई विल मेक चिकन हांडी. फ्लॉप चिकन हांडी. Everything that could go wrong went wrong, and to the point that people were asking, is this chicken? क्या ये बाकी चिकन है जो आपने बनाया है? So you realize कि no, things can go wrong. So what was universe trying to do? जब beginner's luck आपको मिलती है, कोई काम आप पहली दफ़ा करें, पहले इंटरव्यू में ही आपको जॉब मिल गई, पहली ही क्वार्टर में आपको प्रमोशन मिल गई, पहली दफ़ा जहाँ सारे रो रहे थे कि यार इस कंपनी में बोनस नहीं मिलता, आपको बोनस भी मिल गया. So what is happening? The universe is trying to entice you. आपको लालच दे रही है. It's trying to tell you that see, winning is so amazing. कितना मजा आता है जीतने में, कितना अच्छा हम फील कर रहे हैं. But then the second time, when things are not going your way, the universe is trying to test you. कि जो मैंने तुम्हारे लिए आगे इतने खजाने रखे हैं, क्या तुम उसको डिजर्व भी करती हो? Are you worth it? Is what the universe is asking you. So when the going gets tough, और जब आप उस ग्राइंड में से गुजरते हैं, where you're चक्की पिसिंग and चक्की पिसिंग and you're like, oh God, my life is like a chewing gum जिसका टेस्ट और फ्लेवर खत्म हो गया है, लेकिन मैं उसको फिर भी चबाए जा रही हूँ. That's when the universe is testing you. आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप खूबसूरत हैं? तो सारे हाथ ऊपर क्यों नहीं जाते? एक और मैं ट्राई करती हूँ. आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप खूबसूरत हैं? मच बेटर. आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप डिजर्व करते हैं कि आपकी तारीफ की जाए? जबरदस्त. लेकिन फिर आप में से कितने लोगों से तारीफ हैंडल भी नहीं होती? तारीफ हैंडल नहीं होती ना, तो हम वो K3G वाली काजोल बन जाते हैं. ये मेरी तारीफ इसलिए कर रहा है, जरूर मेरी मिठाई की दुकान हड़पना चाहता है. For example, somebody comes to you, and this is a national phenomenon.
हमसे तारीफ हजम नहीं होती, हम अपने आप को डिग्रेड करने में, इंसल्ट करने में, बुरा समझने में इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि if somebody comes up to us and compliments us, that's not natural to us. Now for example, अगर कोई तारीफ कर रहे हैं तो हम कहते हैं इसका ज़रूर मुझसे कोई मतलब है, इसको मुझसे कोई काम है, राइट? दूसरा ये करती हैं आंटीज एंड लेडीज, ऑल ऑफ देम, हमारे पास कोई आके कहे ओह आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं अभी कहाँ, 2 साल पहले देखे होते क्या बाल थे मेरे। You just cannot get your mind wrapped around the fact कि कोई मेरी तारीफ कर सकता है। कॉलेज में होते हैं कोई भूला भटका वैलेंटाइंस डे जब तक बैन नहीं होता और वैलेंटाइंस डे आप मना रहे होते हैं और कोई गलती से आके आपको फूल दे दे, शामत आ गई ना उस बेचारी की, तो आप थप्पड़ मारो उसको, तुम किस किस्म की लड़की समझते हो तुम मुझे? He's like, बीबी सिर्फ एक फूल दिया था, बाजी डर गई and you go away. And that's the end of that love story. We are so hesitant in accepting compliments that you wonder why have we introduced doubt into the equation. आप जिस चीज़ को अपनी attention देंगे वो चीज़ बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। अगर आपको चीज़ें नेगेटिव नज़र आती हैं तो आपको लगेगा कि पूरा दिन it's becoming more and more negative. But when you put your attention to good things start happening to you. लेकिन इसकी एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। आप में से कौन समझता है कि वो बहुत अमीर है? ओके, आप में से कौन समझता है कि वो बहुत अमीर हो जाएगा इन बाय द एंड ऑफ 2017 आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, ठीक है, अरबपति होंगे। सो अब लेकिन को इस जुमले में हम खुद ही एंटर करते हैं, यार वो मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है लेकिन, बट इफ ऑल दीज आर वर्ड्स विच आर रेजिस्टेंस। हमें जब ये बताया जाता है कि एनीथिंग यू आस्क फॉर यू विल बी गिवन, जिंदगी में कॉन्ट्रास्ट है आपके सामने, ये कॉन्ट्रास्ट आपको मजबूर करता है और मांगने पे। आपका घर छोटा है, स्पेस इनफ नहीं है, आप बड़ा घर की ख्वाहिश करते हैं। आपकी तनख्वाह कम है, आपको तनख्वाह ज़्यादा चाहिए। आपके पास कपड़े कम हैं, जो कि ख़वातीन का हमेशा का मसला है, आपको कपड़े ज़्यादा चाहिए। वो सब कुछ होता है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द आस्किंग मोड एंड द रिसीविंग मोड। यू विल ओनली रिसीव थिंग्स वंस यू आर इन द रिसीविंग मोड। इससे हमारी क्या मुराद है? हम आस्किंग में तो लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पे अम्मी को कहते हैं अम्मी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, एंड यू आर नॉट वेटिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ऑल द ब्रिलियंट थिंग्स दैट शी इज डूइंग फॉर यू। आपका फोकस उसके लैक पे इतना ज़्यादा है कि उसके आने की गुंजाइश ही नहीं। इसको एक और तरह से देखते हैं, यू आर बेसिकली वाइब्रेशनल बीइंग्स। एवरीबडी एग्रीज वी आर ओनली एनर्जी, राइट? Everything that is real to you, what is happening right now, is past work. What happens is कि जब आप energetically काम कर रहे हैं, जब आप एक vibrational दुनिया में हैं, तो जो चीज़ आपके सामने है, वो बहुत पहले आपने vibrationally की थी या मांगी थी। इसकी एक मिसाल लेते हैं। ये चेयर कैसे बनती है? मैम आप बताइए, ये चेयर कैसे बनती है? इसके लिए क्या चाहिए सबसे पहले? You need to have plastic, you need to have metal, all the ingredients, then you need to have a skill set, somebody is going to make it for you and then it's going to be made. आप क्या कहेंगी? How do you make this chair? I think first of all you need labor, human, to actually start with the process of making a chair. Okay? आप क्या कहेंगी? How is this chair made? I think पहले हमें एक रिसोर्स चाहिए होगा जिसको बनाएगा, उसके बाद सारी मटेरियल और टिपिकल पाकिस्तानी खातून, हमारा जहन जाता है मजदूर, किधर है वो मजदूर जो ये चेयर बनाएगा? जी आप क्या कहेंगे, कैसे बनेगी चेयर? यू हैड योर हैंड अप, यू हैड योर हैंड अप। जी इंटेंशन, दैट इज द राइट आंसर। पहले ये चेयर जब ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं आती, ये आपके जहन में बनती है। अगर यार एक धड़कती भड़कती पीली चेयर होनी चाहिए पहले आप जहन में सोचते हैं, फिर उसके बाद आप उसके लिए प्लास्टिक चीज़ें, उसकी डेडलाइन, उसकी बाकी चीज़ें आती हैं आपके जहन में। सो एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव इज फर्स्ट क्रिएटेड इन योर माइंड्स। सो एवरीथिंग दैट इज रियल, यानी आज अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैंने कभी ना कभी इसकी या तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ख्वाहिश की, मैंने कभी सोचा था इसके बारे में। Maybe this is what I enjoyed and I attracted this into my
my being, my reality. तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, इसकी इंटेंशंस आपने बहुत पहले इसके बीज बोए थे, बहुत पहले इसके बारे में सोचा था। तो अगर आज की इस रियलिटी को बदलना हो तो हम क्या करें? Have better intentions, have something that will show up much later. Now, is it difficult to create buttons or maybe make castles? दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ख्याल की तरह ही शुरू होते हैं। जब मैं एक चेयर के बारे में सोच सकती हूँ तो मैं महल के बारे में भी सोच सकती हूँ, राइट? तो क्या वजह है कि चेयर तो बन जाती है लेकिन महल नहीं बनता। कभी कभार हम सुनते हैं ना, कबूलियत का वक्त था, आप सोचते हुए जा रहे हैं मैं प्लीज़ टेलर ने जोड़ा ख़राब ना किया हो, और वो ख़राब नहीं होता। आप सोचते हुए जा रहे होते हैं कि यार प्लीज़ आई होप कि कोई सिग्नल बनना, मेरे ऑलरेडी रेडियो प्रेजेंटेशन है, कोई सिग्नल बन नहीं मिलता, बिकॉज यू हैव नॉट एडेड एनी रेजिस्टेंस टू द थिंग। ऑन द अदर हैंड आप कहते हैं यार काश मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, लेकिन आ नहीं सकते, आ भी जाएंगे तो खर्च हो जाएंगे। दैट्स वेयर यू किल इट। अपनी ख्वाहिश को आप अपने जहन में ही मार देते हैं। एक बात तो तय है कि आर यू द हीरोइन, द मेन प्रोटैगनिस्ट इन योर लाइफ, या अपनी लाइफ में भी आप साइड कैरेक्टर है, या आपने खुद डिसाइड करना है। क्योंकि कभी कभार हम अपनी पावर दूसरे को लिटरली प्लेट में रख के पेश करते हैं कि जी आप ये करेंगे तो मैं खुश होंगी, सरताज आप मुझे फूल ला के देंगे तो मैं आज मुस्कुराऊंगी, वरना नो आई विल नॉट मुस्कुराओ फॉर आइदर। You all agree that this is the International Women's Day and you're all amazing, glorious women having an incredible life. आज आपने अपने लिए क्या किया? How many of you have done something for yourself? योगा तो आपको HR ने थैंक यू अरेंज कर दिया, आपका बस तो चले, आप कुर्सी से ना उठें, है ना जी? You had that intention somewhere, or somebody had an intention. Every time they looked at you, they're like, oh, they're all so overweight. They need yoga, preferably twice a day. इनको दिन में 2 दफा योगा कराओ ताकि ये सारे सही हो, हैं जी? आपने कभी देखा है वो फेसबुक पे कितने लोग हैं यहाँ पे? Almost everybody. So आपके पास भी वो फॉरवर्ड आती होगी कि जी this 80-year-old Chinese woman, this 90-year-old Japanese woman, वो जो कभी पेड़ पे चढ़ गई है, कोई साइकिल चला रही है, कोई पहाड़ चढ़ गई है, और हम 45 के बाद उनसे रिक्शा नहीं बैठा जा रहा। कितने लोगों की अम्मी और खाला और दादी चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ती। See, this is what we do to ourselves. And why is that? Because आप में से कितने लोग हैं जो हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफा कोई एक्सरसाइज करते हैं? बाय एक्सरसाइज शॉपिंग इसमें काउंट नहीं होती। No matter how many times you go up and down the mall, that does not count as. उसमें सिर्फ हार्ट रेट आपका बढ़ता है प्राइसेस देख के, एक्सरसाइज से नहीं बढ़ता। कभी अपने पर्स को देखते हैं, कभी हम वो कपड़ों को देखते हैं और कहते हैं अच्छा एक ही ठीक है, एक्चुअली मुझे ये कलर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। We're all experts in that. But the fact of the matter is, your life, your health, your body is like a temple. This is the आपके unfortunately कोई spare parts नहीं मिलते। This is the only body you have, and the better you take care of it, the longer it will last you. वरना यही होगा कि जी लाठी, फिर आप कहेंगे कि क्या हो गया मेरे साथ। This time that you have in your life right now is the only time. कितने लोगों को ये पता है कि जी present is everything. Present is everything, right? Why is that? Every time you're fearing or you have doubt, क्या होता है हमारे साथ? जब आप fearful होते हैं, तब आप अनदेखे future से घबरा रहे होते हैं. You don't know what's going to happen, ठीक है? जब आप anxious हो रहे होते हैं, जब आपको depression होती है, जब आप sad हो रहे होते हैं, is when you're looking at the bygone time. वो गुजर चुका है. It's just a memory. और आप उसके बारे में सोच सोच के हलकान हो रहे हैं। आप सोचते जा रहे हैं कि यार मैं कल गिर गई थी, आज भी हो सकता है गिर जाऊँ। You know, for example, how many of you have faced a heartbreak? और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। जिसका इस वक्त तक heartbreak नहीं हुआ, there are only 2 reasons. I mean, आपकी नब्ज भी बंद होगी इस वक्त। अगर आपकी नब्ज चल रही है और आप यहाँ बैठे हैं, और जो मुझे लगता है कि देखिए, this has nothing to do with age. Women only are young women, very young women, or very very young women.
We never get old. That is the way we are. You know, biology ने हमें ऐसे डिफाइन किया. लेकिन हार्ट ब्रेक हम सब ने फेस किया. There's a very remarkable difference between men and women when they go through a heartbreak. और मैं आपको ये मेरी observation है. लड़कों का हार्ट ब्रेक होता है तो उनकी बार्बर से, नाई से लड़ाई हो जाती है. Their hair starts to grow, their mustache starts to grow, their beard starts to grow, and everywhere they could be hair, there is hair. And they tell you that, oh my God, this Majnoo time, you know, what girl will give you attention at that time? यार, अच्छा ठीक है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन साबुन, कंघी, ये तो गिवन होना चाहिए. On the other hand, लड़कियों का हार्ट ब्रेक होता है, हम बोल्ड हो जाते हैं. बोल्ड फॉर चेंज. हमारी ऐसी की तैसी. तुम्हें लंबे बाल पसंद है? गोइंग टू द सैलून राइट नाउ. शॉर्ट वॉक कर दे और पर्पल कलर कर दे मेरे बालों के. So anybody who's ever asked for a drastic hair change, हम पहले कहते हैं भाईजान कॉफी पिलाओ, इनसे पूछो इनका ब्रेकअप तो नहीं हुआ. अगर इनका ब्रेकअप हुआ है तो ये जो कह रही है अभी मत करो, 2 हफ्ते बाद दोबारा आएंगे and then they will blame you. So don't do it. But this is the way we are. So this bold for change, which I want to come to, हम bold तभी होते हैं जब हम drastic change करना चाहते हैं. जब हम चाहते हैं कि you know what, I love you, but you're making it very very difficult for me to love you. ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम लव क्या, तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते, तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते. सो एट दैट स्टेज यू नीड टू काम डाउन एंड टेल योरसेल्फ कि आप अपनी हैप्पीनेस की जो चाबी है वो किसी और को नहीं दे सकते. व्हाई इज इट दैट यू वांट अनदर पर्सन टू एक्ट अ सर्टेन वे टू बी हैप्पी? यानी क्यों हम चाहते हैं कि हमें XYZ एलिमेंट्स जब तक सही नहीं होंगे हम खुश नहीं हो सकते? यानी रोज लड़ाई होगी हर घर में. यानी मेरे पेरेंट्स आज तक दे बीन मैरिड फॉर 40 years, दे फाइट ओवर ओ तुमने तौलिया कहाँ पे रखा, ओ तुमने. एंड समबडी वाज, यानी एक बड़ा फेमस इस तरह का जोक उन्होंने उसमें भी डाला था ऑन फेसबुक, टॉकिंग अबाउट दिस हस्बैंड एंड वाइफ गोइंग टू अप्लाई फॉर डिवोर्स. व्हाई? बिकॉज माई वाइफ डज नॉट नो हाउ टू यूज द टूथपेस्ट करेक्टली. Maida, what do you mean by correctly? No, she always presses it from the middle. Not from the back. It needs to be from the back, slowly going out. The divorce lawyer said, you know what? Get another toothpaste. It will be much cheaper than the divorce. And then, just for the sake of it, आप क्या करें? उस खातून को मशवरा दिया. उन्होंने कहा नीचे रखो टूथपेस्ट, उसके इर्द गिर्द तालियां बजा के घूमो, बोलो my toothpaste, I can do whatever I want with it. I can press it wherever I feel like pressing it. But don't let other people press your buttons is the main thing. जब आप एक जोन में चल जाते हैं ना, then there is that downhill, एक negative spiral. Then there's no looking back. Then nothing can catch you back. घर से लड़ाई करके अगर हम आते हैं ना, तो पहले एक स्टिंकर ईमेल निकालते हैं ऑफिस आके, और फिर वो बॉल रोलिंग हो जाती है. फिर उस मेल को देख के बाकियों को भी अपने प्रॉब्लम्स याद आ जाते हैं. फिर वो प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है. So before you attempt to do anything, make sure you're in a good mood. यानी आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा मसला है ना, जब गुस्सा आ रहा हो तब उसको प्लीज़ टैकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उसको और बिगाड़ेंगे. तभी कहते हैं कि every decision that you're supposed to be making should be made when you're happy. And happiness, कुछ लोग आपको ये चीज़ ज़िंदगी में खुशी खुशी कुछ नहीं होती. ये सब झूठ है. ना मोहब्बत होती है ना खुशी होती है. Have you heard this before? Yeah? And have you heard the fact, we were just having an offline conversation. किसी ने कहा जी 3 बड़ी प्रायोरिटीज हैं जिंदगी में, और तीनों की तीनों आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हैं. एक को संभालने बैठते हैं तो दूसरी हाथ से निकल जाती है. इट्स लाइक अ जगलिंग ऑफ बॉल्स इन द एयर. फैमिली लाइफ, करियर एंड पर्सनल केयर. पर्सनल केयर की तो लोग कहते हैं ओहो पूरा दिन मैडम फेशियल करवा रही हैं, काम करवा रही है, जिम जाएंगी. काम कौन करेगा? You've all heard this. करियर पे काम फोकस करते हैं तो ताने मिलते हैं, बड़ी करियर ओरिएंटेड है, so selfish, only wants to get ahead in life. I don't want a person like that. होम मेकर बनने जाते हैं तो कहते हैं हो पढ़ लिख के ज़ाया किया, इतनी अच्छी सीट भी ज़ाया की तुमने, क्या फ़ायदा हुआ? अम्मी अब्बू ने इतना MBA कराया था, डॉक्टर बनाया था, अब घर में रोटियां डाल रही हो, बासमती मैनेजमेंट. What is this?
The fact is, every decision in your life has to be motivated by one inspiration only. If it gives me joy, I will do it. Don't try to do it as a sacrifice. Sacrifice आपको resentment देती है. आज आप किसी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, कल आप कुर्बानी दे रहे हैं, तीसरे दिन कहते हैं यार what the hell, what this कुर्बानी की ईद is not going away. हर वक्त मैं ही क्यों कुर्बानी दूँ? तो जो शुरू बहुत आसान लग रहा होता है, eventually it becomes a pain point. So don't do things you are not inclined to do. That is not making you happy. The smallest of things. Since we are talking about heartbreaks, so we've also been in the nicer courtship period. चाहे वो मम्मी के बाद हो, कॉलेज में हो, जब आपको जो फ्लेवर आइसक्रीम का पसंद नहीं भी होता, आप खा रहे होते हैं. हाँ, चॉकलेट, आपको चॉकलेट पसंद, बहुत पसंद है मुझे चॉकलेट. मैं बस चॉकलेट ही खाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं खाती. Later on, it's like I hate chocolate. I never liked chocolate. फिर वो 2-3 गिफ्ट्स जो आधे यूज़ किए हुए परफ्यूम्स के साथ वापस जाती हैं चीज़ें. Don't get to that point. Be bold, and being bold means standing up for yourself. कभी आपको यह लगता है कि what you want to do in life is not conducive. यानी अम्मी नहीं इजाज़त देगी, अब्बू नहीं इजाज़त देंगे, भाई को प्रॉब्लम होगी, हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं तो जब बच्चे 10 साल के रहते हैं तो बच्चों को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. मम्मी आप ये करेंगी? No. When you really want something, the universe will adjust. You only have to follow your heart's desire. हमने अक्सर सेल्फ केयर को, अपना ख्याल रखने को खुदगर्जी का नाम दिया, लेकिन एयरप्लेन में सबने सफ़र किया ना. जब ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो पहले खुद लगाना है, उसके बाद दूसरे को हेल्प करनी है. It's exactly like having a pitcher of लस्सी. जब तक इसमें लस्सी है तभी दूसरों को देंगे ना. खाली जग में से किसी को कुछ नहीं करता. So you are that jug, you are that vessel. और लाइफ हमें हमेशा एग्जाम्पल्स इधर उधर दे रही होती है. It is trying to guide you in the right direction. Your intuition, your liking, your help, your happiness. What is the number one sign कि I'm not in the right direction? अक्सर हम लोगों से एडवाइस मांग रहे होते हैं ना. हम कह रहे होते हैं कि जी आप मुझे मशवरा दें, मैं इस सिचुएशन में हूँ, करियर का ये स्टेज है, मुझे आगे क्या करना चाहिए. What is the telltale sign कि जो आप कर रही हैं वो सही कर रही हैं या जो आप कर रही हैं वो आप गलत कर रही हैं? There's a very remarkable, amazing technique that we all know. Any ideas? Yes. Like follow your gut feeling when you think that something's not meant for you, your mind and body will be restless, it will accept it. But when something is good for you, your mind and body will naturally accept that. Sometimes the mind and body are not giving you clear indications. अक्सर होता है ना कि यार मैं बहुत डबल माइंडेड हो गई हूँ, ये करूँ या नहीं करूँ. Then what should you do?